Someone DM me asking गाली क्यों देता है बहन के लोड़े. So and once our batch left, गांड लग गई भाई. तो तुम सड़क में से randomly ऐसा 4 बच्चे उठा लो, उसमें से 2 DPS के निकलते हैं. हुकअप कल्चर क्या है वहाँ पे? नोटी उड़ा के बहन के लौड़े. Oh hi Karunya, how I love Jadu. meet you? Awesome. How are you? I've been great. How are you? I'm great, Hritik. So we have Hritik Roshan with us live today, and I'm so fortunate. Yes, it's a phenomenal experience. How What's up? are you doing? क्या जा रहा है? Yeah, सब ठीक. And I'm saying I hope you're having a good day as well. Yeah, 100%. Like, I am really excited for this conversation. I've been thinking about this all day, honestly, that it will be literally a really good conversation. मुझे ये बताइए कि आप hate से कैसे deal करते हो? मतलब very intense question, first question के हिसाब से, but how do you deal with hate? Like, I can see that coming. We're diving right into it. Yeah. Like it's just like ignore it. Like मैं क्या ही कर सकता हूँ? Either like I pin it or Yeah. I ignore it. There are two ways of dealing with it. अगर बहुत ही गंदा है like हाँ मतलब then I just like ignore it. But then like if it's something insulting but funny, I pin it and I want other people to see it as well because I don't care that way. Like yeah, it is funny. I appreciate it. अरे so that day like this like I think my reel was not getting posted. So मैंने बोला यार ये BC upload क्यों नहीं हो रहा है? Put it on my story. Someone DM me asking गाली क्यों देता है बहन के लोड़े. So अरे यार. thankfully I don't get उतना hate नहीं मिलता क्योंकि I don't make very triggering content. But Yeah. it's fine. I get it. It's cool. How long have you been in London now? It's gonna be a year. Like in a month, it will be a year. To be And क्या कर रहे हो आप अभी? क्या चल रहा है लाइफ में? लंदन में कैसे जाना हुआ? क्या प्लान था? स्टार्टिंग से था मन या फिर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर के करने का मन था तो कर लिया? yeah, starting तो actually मेरा plan था ऑस्ट्रेलिया जाने का 2 years ago. But then like COVID के time the borders were shut. So I was like यार okay I'll wait for a year more. अब खोलेंगे borders, अब खोलेंगे. So like they didn't open and I didn't want to wait more. I decided UK because it is good for marketing and I used to see myself back in marketing and I still do in a way. So I thought marketing में masters करूँ, marketing communications to be specific. So yeah, and here I came like a year ago. बस. So are you working somewhere right now apart from your studies? I work at a restaurant. Oh wow, how's it like? I had mentally prepared myself for part-time, but I had not mentally prepared myself the things I have to do in part-time. क्योंकि यार जब तुम दूसरों के प्लेट उठाते हो ना, झूठा प्लेट, जब तुम घंटों तक उठाते रहते हो तुम, थोड़ा सा it gets like कि मैं क्या कर रहा हूँ. Like there comes a day in like every week, I'm like यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार ये क्या part-time है, यार क्या जिंदगी है. So like, but you can't complain like क्योंकि you chose this. So I was like ठीक है, like cool, it's decent money. Because you get tips and all restaurant mein. I was watching your podcast, the Untriggered one, and you shared a story of you going out with your friends to this new country. I don't remember. Europe mein shayad. So visiting a country as a foreigner and living in the same country later on, what's the difference like? मैं जब as a tourist गया था, I had forgotten everything. I was like there was consciousness. मतलब तुम्हारे पास एक budget होता है. So you have surplus कि तुम इतना उड़ा सकते या फिर तुम उसको बचा के like you it depends on how you spend it first of all. Then उसके ऊपर से यार when I went to Amsterdam, Paris, Prague, whatever, and मैं सिर्फ ऐश करने गया था. That was like it was like I just like was clubbing every day. बस वही था. When you come as a tourist, you're like oh my god foreign बहुत ही सही है ये सब. Oh this girl so यही चलता है. And then things stop exciting you to that level, whether it is the city or people. Tell me about the clubbing scene. How is it different in London and India? London it has one of the best nightlifes, to be honest. But I think you're the wrong person. अगर तू ये क्वेश्चन मेरे को दिसंबर में पूछ would have been like यार क्या सही है और यार टाइम नहीं मिलता. पहली बार मिलता है तो भी यार I'm like घर पे बैठता हूँ. फिर तुम बाहर जाते हो, कम से कम you end up spending 40-50 pounds, which is $5,000. Especially when you're paying your own rent and doing things like that, it's hard. It's fine, but if you go spontaneously, the amount of money you lose, it's crazy, bro. पता भी नहीं चलता तेरे पैसे चले गए. How's the content scene in London? Like वहाँ के content creators में, यहाँ के content creators में, specifically for you,
जब आप यहाँ से ग्रोथ लेके वहां जा रहे हो ऑलरेडी एज अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट्स द डिफरेंस लाइक? पहली बात तो लाइक व्हेन आई फर्स्ट कम आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार आई डोंट जस्ट वांट टू स्टिक टू इंडियंस इन अब्रॉड वाले कंटेंट जो होते हैं ना, दैट इज द इजीएस्ट होना जाए। आते यू सी इतने सारे डिफरेंसेस है, फिर वो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट, यू स्टॉप बिकमिंग दैट इंडियन इन अब्रॉड, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट अब्रॉड कल्चर। तो फिर तुम अपना देसीपना तुम कितना ही डिफरेंशिएट करोगे, है ना? दैट कंटेंट क्रिएशन एस्पेक्ट इज वेरी वायरल हियर, आई नो दैट। अदरवाइज यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन इट्स प्रेवलेंट इन टिकटॉक, बहुत ज्यादा यहाँ पे टिकटॉक का कल्चर है, स्नैपचैट कल्चर बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई केटर टू इंडियन ऑडियंस। मैं अपलोड भी रात को 10 साढ़े 10 बजे करता हूँ, ताकि इंडियन आईएसटी के हिसाब से मैं करता हूँ। मैंने पढ़ा सुना एक दो जगह कि आप रात को 1 से 4 के बीच में किसी शिफ्ट में बनाते थे, घर वालों को नहीं बताया था, इसका क्या रीजन था? Is this that like I as a person like in front of my parents, like I don't do all these things. I am very shy. So I used to use that time into like making reels, and mom dad को मैं बताता नहीं था because वो बोलते थे हाँ फिर दिखा दिखा क्या बना रहा है। तो मैं लगता था यार क्या मतलब क्या बोलेंगे। I used to wear that like अभी कभी पहनता हूँ like but लड़की बनने के लिए you wear that black like I used to हाँ मैंने देखा हो, रोडीज वाले पे देखा मैंने। हाँ मस्त। उठा करके सोचेंगे तो फिर I don't want to answer लड़के को that. पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया और वो लड़की बन रहा है वैसा। अभी हाउ इज इट चेंज फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम टू अभी, मतलब अभी आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो लंदन में, योर मास्टर्स, योर जॉब, हाउ इज इट कमिंग, लाइक वो क्रिएटिविटी भी कहाँ से आ रही है इवन? प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिविटी तो काफी सेम ही है कि लाइक अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, कुछ आइडिया आया, आई नोट इट डाउन, आई बिल्ड ऑन इट। आई एम डूइंग इट ऑन अ मास लेवल थोड़ा सा भी, क्योंकि लाइक आई एम मिमिकिंग लाइक थोड़े बड़े स्किल में कर रहा हूँ। आई हैव दैट स्पेस हियर टू डू इट, वो एक चीज है। दूसरा की लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर यू जस्ट ग्रो, यू गेट बेटर आइडियाज, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या उस दिन जिलेट का एड कुछ तो किया था मैंने, सो टू इवन थिंक अबाउट इट एंड लाइक वो एडिटिंग प्रोसेस, या मैंने तन्मय भट्ट का रील मैंने पूरा रिक्रिएट किया था, तन्मय भट्ट का इंस्टा लाइक सॉरी यूट्यूब रिएक्ट वीडियोस आई रिक्रिएटेड इट। तो वो एक मास लेवल पे आई एम रिक्रिएटिंग थिंग्स एंड आई थिंक दैट इट्स फनीर। आई फील पहले मैं रील बहुत फ्रीक्वेंटली डालता था इंडिया में, हर 2-3 में एक दिन, एवरी डे ऑलमोस्ट। यहाँ पे 3 दिन खाली, हफ्ते में 2 बार डाल। आई पुट आउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में फोकस कर रहा हूँ, सो इट्स फाइन। डज इट इम्पैक्ट योर रीच ओवरऑल, लाइक फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते होंगे, तो हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क? लाइक बहुत सारी थ्योरीज हैं लोगों की कि ऐसे होता है, दिन में 2 रील्स डालो, ये करो वो करो। आपने जैसे बताया कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कम करने लगे हो, आप मास को रीच आउट करना चाह रहे हो, बट यू आर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? हाँ, सो how does it work? Like, is it impacting your account reach? Is it the same? Is it any better now? account reach, bro, it's like a very unstable this thing. Like I think that's the same for everyone ki like there was a phase ki like last month 4 वीडियोस में ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिट हो गए थे, तो फिर बढ़ता है। ये महीने कम हो गया है तो थोड़ा घटता है, फिर वो आई डोंट फोर्स आउट। अगर यह एक हफ्ते में अगर मेरे से 3 रील बन गए, 4 रील बन गए, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। आई डोंट थिंक एंड गो कि लाइक हाँ ये हफ्ते में मुझे 2 ही बनाना है वैसा। सो अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आ गया तो आ, तो फिर एंड हाँ इम्पैक्ट इट हैपेंस। देयर वाज अ फेज देन आई वाज जस्ट स्टक एट लाइक 120 के पे अटका पड़ा हुआ था, फिर वो अचानक फिर 130 हो गया, फिर वापस अटका पड़ा होता है। सो एल्गो इज वियर्ड यार, कुछ बोल ही नहीं सकते। इट्स इन अभी बट या लाइक सडनली जब बढ़ता तो अच्छा लगता है। Obviously. ऑब्वियस तब तो बट सही है यार। Let's talk बट about brand promotions. You told me about the Gillette thing. You work for Gillette. आपने Mercedes के साथ भी काम किया है शायद, आपने HDFC के साथ भी काम किया है। जिलेट तो रील बनाया मैंने, जिलेट तो रील था काम। HDFC, so I used to work at an advertising agency before all of this, like around 2019 2018 ad agency में काम, and then वहाँ पे यार it was like गांड-फाड़ work, like it was, and तब I used to work for these clients as an ad like agency में, like HDFC, Singapore Airlines, ये सारे client, and then अब तो ये सब सोचता था एक्टर बनना था, अभी भी एक्टर लाइक हाँ अगर हो सकता तो बनूं। Is it बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसा वो एक टाइम था कि यार काश एक्टर बनना था, बॉम्बे में था एड एजेंसी में, बट या एजेंसी लाइफ इज क्रेजी मैन, क्योंकि आई थिंक यू काइंड ऑफ हैव एन आइडिया, आई एम गेसिंग कि लाइक तुम 10 बजे जाते हो, देयर इज नो आउट, इन टाइम ही होता है, तो तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है ज्यादा। सो इफ यू आर कंप्लेसेंट विद दैट तुम कर लो, बिकॉज आई सी अभी मेरे दोस्त मरा रहे हैं अपनी
मरा रहे हैं, they're happy, it's fine. Yeah. Abhi like I think like agency life made me realize why a person probably should not be in agency. Like with that experience, I learned negatives काफी ज्यादा. Positives तो है, if you're passionate about it, it's cool. Yeah. But हाँ, like working with the brands, it was a good learning experience. Yes, it taught me a lot. Agency experience मिला तो शायद job भी help हो जाएगा अभी future में. But I think उतना ही था यार जितना है. Now I don't know if I would want to continue my life in an agency life. But Yeah. देखते हैं अभी क्या होता है. So it's very weirdly like, so one of the companies I used to work for, मैं restaurant में काम करता हूँ ना, उसकी HR, I served her. She came and then yeah, I didn't expect. Indians आते तो when you're serving them, you start talking to these Indians, you know, कभी-कभी. तो फिर he was like, I'm from this company. I was like, I'm from Publicis, and I was like, oh, yeah, I was from Publicis. So she's like, oh, I'm the like, आपको याद है? And then she's like, yes, I remember. So yeah, I ended up serving her food. Wow. So, and Wow. it's a small world sometimes, but it's good at agency. Okay. But say, You said you never want to go back to the agency life again. Explain that. Like, a lot of people who follow me, DM me every time. It's all about either I run my own agency now, so I understand where you're coming from. So that's one reason why we have very sweet policies, so to say. जैसे कि we give free pizzas every Monday to all the employees or interns. We make sure that it's not going beyond 6 hours a day. Like we function for 6 days a week and it's 6 hours a day. hey, I want to join this. Which For sure. Done. But yeah, honestly, like we are trying to, जितना हम लोगों को negative experience मिला ना agency life से, so we are trying our best कि हम लोग यहाँ पे अभी we have a small team of 12 people. And we are trying our best कि वो 12 लोग कभी भी ये feel ना करें कि agency life खराब होती है, because we felt that at some point in time. So we are really proud about that one factor. But would you like to dive deeper into the agency part? Like how did it happen? Your first internship, first job, क्या mindset था उस time पे? What was your age back then? सब कुछ. भाई एज तो था. I was my first year of my college, first year of my undergrad. और फिर तब the standard process of applying for a job is कि तुम मेल करते हो HR को या फिर तुम कंपनी के वेबसाइट देख तुम one of these faculty she just told me कि नहीं वैसे कुछ नहीं होता. तुम अपना CV लो, walk in करो, walk in interviews जाओ, CV drop करो, तभी होता है. So there was this time when कॉलेज से छुट्टी लेके I think पूरे बॉम्बे में I don't know if you've been to Bombay like or you've lived in Bombay. It's very tiring यार. तुम 2 घंटा भी बाहर खर्च कर दिमाग खराब हो जाता हमारा. So पूरा दिन मैं धूप में like from one agency to another I've just dropped CVs and they're like and वो reception में ही छोड़ना पड़ता है because अंदर थोड़ी लेते तुमको. I really just like walked like taken like I've spent like 2,000 rupees a day just to go and drop CVs क्योंकि बंद भी हो जाएगा एजेंसी 5 बजे 6 बजे के अंदर फिर वो रैंडम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. तो फिर you walk so I've just like dropped CVs I've gone on फिर वो help नहीं किया. And then like I was like asking for my friends कि कुछ job हो जाए, internship लग जाए, वो भी नहीं हुआ. फिर एक website है internship में I started applying for internships. वहाँ से भी कुछ click हुआ. So there was this agency called Digitas. Okay, Digitas. And मुझे जाना था. And internship में I had applied DigiSAS. क्योंकि वो internship में दिखा था DigiSAS मैं apply करते गया DigiSAS or whatever. And then like I got a mail from DigiSAS. For some reason I thought from Digitas और मैं बहुत खुश हो गया था. I was like, oh I got Digitas ये वो. And then later when I read the offer letter I was like, you know DigiSAS है यार. Like I was like क्या मतलब कुछ तो मिल गया whatever. And I used to sell. I was a salesman door to door, like gym to gym salesman. And like deliver like a brochure and explain like a gym equipment. I used to pitch gym products to like to gyms. Basically, Bombay के हर gym जा चुका हूँ मैं to pitch this product. This was my first, like not my first, but then it was like I was just sitting outside like what am I doing like kind of a phase. But I think for a month into that internship या क्या मुझे DigiTask से actually mail आया. And then oh wow circle of life. Then I was like यार ये मैं पढ़ा रहा हूँ DigiTask ही है ना. तो फिर मैं actually फिर उनके interview में गया. And then yeah, that was my proper first internship, DigiTask. It's a good agency, it's a great agency. वहाँ पे and once you get that अच्छी agency में internship ना फिर उसके बाद तुम्हें like other agency में थोड़ा easily मिल जाता है. तो that was very important first step for me. And the experience was pretty
fuck all to be honest, because intern घिसाते हैं, तुम्हारी गांड घिसाते हैं. Yeah. They make इतना, and it was an unpaid internship, तो फिर Oh fuck. Why Why they exploit the did fuck. you join? मतलब just because of the tag you wanted to be there? हाँ, मैं Okay. desperate, घर वालों से पैसे लेके रेंट दे रहा था मैं बॉम्बे में, ये करना पड़ता था. And then and Bombay rent ऊपर से फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना वहाँ पे. Where were you living in Bombay? कहाँ रह रहे थे आप बॉम्बे में? कांदिवली. अरे रे, इट्स एक्सपेंसिव यार. एक कांदिवली में ठाकुर विलेज है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव. मतलब दैट्स लाइक द लाइक पॉश एरिया इन कांदिवली. तो फिर लाइक वो थोड़ा, तो मतलब आई यूज्ड टू स्टे विद माय फ्रेंड. 15,000 पर पर्सन होता था, बट आई स्टिल यूज्ड टू फील दैट्स 50,000 भर रहा हूँ. सो ये तो लाइक दैट वाज नॉट. एंड 15,000 में भी बहुत अच्छा नहीं मिल जाता है बॉम्बे में. दिक्कत है, कितने भी शेयरिंग कर रहा हूँ. लाइक रेंट वाज 45,000. मैं बोल रहा था मेरा शेयर वैसा. Yeah. फिर इंटर्नशिप में 15,000 भर रहे हो, तो सोचो घर वालों से कितना ले रहे हो तुम. तो फिर इट वाज अ वेरी गिफ्ट वाला फेज था वो 2 महीने. फिर तो रेसिप्रोसिटी रेज्यूम हो गया. लाइक इट वाज एन इंटर्नशिप, कंपल्सरी इंटर्नशिप दैट आई हैड टू डू. फिर उसके बाद यार लाइक देन आई गॉट इनटू Publicis, which is a better agency, and then वहां पे मार्केटिंग इंटर्न बना. that was a great experience, great people, great brand. वहां काम करने के बाद I actually got a job later. फिर वो uni के बाद like मैं join किया, and that was TBWA, which is another agency. That was my first job, and that was also a great learning experience. Great people बॉम्बे में. बट अगेन बॉम्बे में if you know लोअर परेल में था. सारी एजेंसीज लोअर परेल, साउथ बॉम्बे, और तुम कांदिवली से लोअर परेल जा रहे हो तो दिमाग खराब हो जाता है. कॉल ब्रो. मतलब did you used to travel by local या कुछ गाड़ी वाड़ी थी? भाई सुबह 7 बजे उठता था जिम करने के लिए, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता. 6 बजे उठता था जिम करने के लिए, एंड देन 7 बजे जिम जाके फिर ऑटो रिक्शा में एक्चुअली काइंड ऑफ चेंज, एंड देन टेक द ट्यूब बोल रहा हूं, सॉरी, लोकल ट्रेन. लोकल बहुत ग्लोरीफाई कर दिया आपने लोकल को. लोकल ट्रेन लेता था. लोकल ट्रेन लेके सॉरी जिम के बाद शेयर ऑटो लेता था, फिर लोकल ट्रेन करके वापस शेयर टैक्सी सेम प्रोसेस अगेन रात को. सो फिर घर पे आके तो यूटिलाइज करोगे विद योर फ्रेंड्स यार. दिस वाज माय डेली रूटीन, एंड इट डिड टेक अ टोल ऑन. तो फिर वो तो होता ही है. टेल मी मोर अबाउट हाउ डिड the phase of mental health go during all this process, because बहुत बार होता है ना कि आप एक जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जहाँ पे आपको you're not feeling you, मतलब आपको मे बी मजा आ रहा है जब काम कर रहे हो, बट you're not feeling like you कि यार मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मुझे पता है. And specifically in Mumbai, city like Mumbai, जहाँ पे the life is different. Like if you're coming from a quiet place like Pune, कि सब कुछ है वहाँ पे, but it's quiet, लोग शांति से रहते हैं. Mumbai is very hustle culture based. तो मुंबई रियल में क्या बोलूं, मतलब इतना, मतलब वहाँ पे लोग आर वेरी गुड. आई लव द पीपल ऑफ बॉम्बे बिकॉज दे आर वेरी हेल्पिंग. आप दिल्ली के साइड निकल जाओ, वहाँ तो मतलब अगर आपने किसी से वहाँ पे मेट्रो के साइड में पूछ लिया कि यहाँ जाना है XYZ जगह, और वो इंसान को पता है सही जगह, वो आपको उल्टा भेज देगा दिल्ली में. बट बॉम्बे पीपल आर वेरी स्वीट, दे विल हेल्प यू आउट. दिल्ली के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ. या आई प्रोबब्ली एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट दिल्ली वाज एक्चुअली प्रीटी गुड यार. मैं 2 दिन गया था, मुझे काफी, बिकॉज तुम Bombay is a great city, but the transportation is so fucked up. Like, like हर लोकेशन में बुरे अच्छे लोग होते ही हैं, तो हेल्पफुल लोग होते हैं. But is this that Delhi का pace seemed normal to me? Yeah. Metro system was like, it impressed me so much. I'm like यार ये होता बॉम्बे में, मैं शायद मेरा मेट्रो काफी सही होता, क्योंकि the transportation only like messed my head up. एजेंसी तो फिर अलग बात हो गई, क्योंकि तुम पहुंच ही रहे हो इतना घिस के, तो फिर तुम थक जाते हो. फिर वहां जो काम दिया जा रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा. सो इट वाज अ डोमिनो. तुम ट्रैवल ऐसा लग रहा, काम फिर और फ्रस्ट्रेटेड, फिर रात को आके और थके हुए, फिर खाना नहीं है, खाना कुक करो. सो इट वाज, तो उसमें से 2 एस्पेक्ट भी ठीक होते हैं ना यार, तो फिर काफी आई थिंक जिंदगी बेटर हो जाती है. बॉम्बे में जब मैं था, तो बॉम्बे, आई मूव टू बॉम्बे लास्ट ईयर अगस्त में, एंड आई एम हियर इन भोपाल अभी तो घर पे, पर काफी टाइम से. लेकिन बॉम्बे का मेरा एक्सपीरियंस ये था यार कि एक तो ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब एक्सट्रीम ह्यूमिड है, तो पूरी स्किन वगैरह ऑयली होगी, उसके ऊपर आप जा रहे हो लोकल वगैरह में, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, राइट. तो मैं जहां भी जाने लगा था, तो मैं एक साइड बैग कैरी करने लग गया था, जिसमें मैं टाल रखता था अपनी, ठीक है, और मैं अपना फेस वॉश रखता था, और मैं एक शैम्पू का सेक्शन. तो लिटरली मैं जहां भी जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, फर्स्ट आई यूज द रेस्टरूम, आधे घंटे में अंदर रहता था, बाल धोए, लिटरली बाल धोए पूरे सुखाए, आई यूज माई हेयर कॉम, उसके बाद फिर फेस वॉश करने के बाद आई वाज लाइक कि हाँ अभी जा सकते हैं मीटिंग में, क्योंकि 2 घंटे का तो ट्रांजिट टाइम लग गया, एंड इट्स नॉट वर्थ इट. मतलब व्हाई डू पीपल
fuck it. लोकल ट्रेन में, सो इफ आई एम वर्किंग आउट, मैं जिम में ऑब्वियसली कपड़ा पहनता था, फिर लोकल ट्रेन के लिए अलग कपड़ा, फिर उतरने के Yeah, बाद जाके हैज टू चेंज अलग कपड़ा, ताकि क्योंकि तुम जो पहन के जाओगे वो तो लाइक यू लुक लाइक शिट बाय द टाइम यू yeah. रीच। ऑफिस जाके थोड़ा सा नहा लेता था मैं, टावल आवल लेके जा, ये करना पड़ता है भाई। दिस और इज आप द गलती से भी जिस दिन कैब ले लो ना वहाँ पे, उस दिन तो गए आप, क्योंकि द कैब विल टेक वन डे। आई टुक अ कैब क्योंकि मैं लेट हो रहा था एंड आई वाज लाइक लोकल, मतलब स्टार्टिंग डेज थे मेरे, वो पहला महीना था मुंबई में, एंड सारी लोकल मिस होती जाती हैं क्योंकि लोग कहीं से भी चढ़ के जा रहे हैं। लाइक आई डोंट नो हाउ, कैसे फिट इन कैसे होते हो यार, तो वो चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मैं जा नहीं पा रहा था, तो आई टुक अ कैब फ्रॉम घाटकोपर टू गोरेगांव वेस्ट, and the fare showed was like 500 600, and I was like okay 45 minutes दिखा रहा है, लाइक ले लेते हैं। 11 बज रहा था सुबह का, और पहुंचते पहुंचते मुझे बज गया 1:30, क्योंकि या एंड आई वाज लाइक फक मैन, मेरा पूरा मीटिंग छूट गया गूगल मैप खुलेगा फुल रेड, फिर ऑल द क्या, टाइम। ऑल द टाइम। फिर वही है, द ओनली सोल्यूशन इज तुम या बोल तो के बाहर जाओ। हो, तो तब ऑफिस तुम्हारा साउथ बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे के लिए पैसे नहीं है अब। तो या सोल्यूशन क्या है भाई? so, So I rented this apartment in Ballad East. It was close to my office, the Yuva office in Mumbai. So I was very particular about कि मैंने कैलकुलेशन किया थोड़ा कि मैं थाने में दीदी रहती थी, and थाने से मैं रोज जाऊंगा आऊंगा। It was 5 hours of travel, and I was like, it's not worth it. Plus the जितना ट्रांजिट में टाइम और पैसा जा रहा है, it's costing me around, इसमें थोड़ा और मिला के I can rent an apartment किसी के साथ शेयरिंग में। हाँ तो that was the best decision of my entire life कि ठीक है, लाइक 15 मिनट बाय ऑटो, दैट्स फेयर। हाँ हाँ, नहीं फेयर, अच्छा डिसीजन था ये। या बेस्ट बेस्ट, लाइक या पापा मम्मी को कन्विंस करने में, दे लाइक व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड सो मच ऑन द रेंट, दीदी वहीं रहती हैं। लाइक आप चुप रहो, आपको नहीं पता, आप मुंबई आओ पहले। यार, ये ऑटो वाले मना करते हैं यार, have you- ये हर बात पे नहीं बोलते, तुम्हारा वैसे ही मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दे से नो फॉर एवरी प्लेस, क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम रूट, उनसे या घुमाना नहीं होता, तो फिर दैट्स अननोइंग इटसेल्फ। या आई मीन लाइक लंदन में रहने के बाद इट्स आई थिंक इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बॉम्बे एंड पुणे, क्योंकि यहाँ पे लोग ना ही टू, इट्स नॉट टू फास्ट, इट्स नॉट टू स्लो, तो यही चाहिए था मेरे को। तो फिर बट आई डू मिस पुणे बॉम्बे थोड़ा सा, वो थोड़ा सा वो मिस तो इंडियन टच थोड़ा रह रहा होगा ना। वो व्हाट्स तो द बेस्ट पार्ट दैट यू लाइक्ड अबाउट इंडिया एज अ होल, के पुणे हो या मुंबई कहीं पे भी, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट व्हिच इज नॉट इन, व्हिच यू आर नॉट एबल टू फाइंड इन लंदन? yes, everything is cheaper in India. That's the main thing. या है ना, like तुम लेस का पैकेट लेते हो, तुम 200 पाउंड, तुम 200 रुपए दे देते हो यहाँ पे, so it's like ओके everything is cheap. And the fact that you have friends and family there, I think that is like very important. Comfort level अलग होता है यार। तो यहाँ 10 बजे के बाद खाना नहीं मंगा पाते हो, तो भाई फिर बंद हो जाता है सारा दुकान, एवरीथिंग इज शट। लंदन में। हाँ यार, लाइक इट्स 10:30 के बाद, लाइक ओनली द फास्ट फूड, लाइक अब डोमिनोज वोमिनोज खुला रहेगा, हर बंदे को डोमिनोज ओके फ्री। 1 बजे खोलो, जोमेटो में कोई ना कोई छोटा रेस्टोरेंट तुम्हें दे देगा आके। राइट यहाँ यहाँ पे नहीं होता वैसा। एंड अलग डिलीवरी चार्ज इंडिया में, या तुम मैक्स क्या 80 रुपए लगेगा, 80। मैक्सिमम लाइक 40 50 60 वही रहता है। यहाँ पे लाइन, वो भी हम सोचते हैं यार क्यों जोमेटो प्रो ले लेते हैं। या यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस क्या, 12 पाउंड, दैट्स अ बाप लॉट रे। यार। डिलीवरी में तो उतना तो खाता भी नहीं हुआ है। तुम 6 पाउंड, उतने का अमाउंट भी नहीं बन रहा। 6 पाउंड का मंगा रहे, 10 का डिलीवरी चार्ज, दैट्स फकिंग इनसेन ब्रो। लाइक एंड तुम, मैं भूखा ही सो जाऊंगा फिर। क्या है ये, क्या कल बना। राइट, यहाँ पे तो वो है ना कि वो टपरी वाले भैया से दोस्ती है, एंड उनसे ही बोल दिया, 5 साल से उन्हें जानते हैं कि भैया ये भिजवा दो यार, वही, एंड ही कीप एवरीथिंग रेडी सॉर्टेड। इन वन वर्ड, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस इज ये कन्वीनियंस। जो वहां पे इंडिया में है ना, वो यू वोंट गेट इट हियर, नो मैटर हाउ कूल हाउ हॉट पीपल आर ओवर हियर, या कितना ही फन। द कन्वीनियंस इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज वांट टू गो बैक टू। तो या फिर वो चीज है यार बस, बट अदरवाइज जब इट्स बर्तन खुद धोने पड़ते हैं तब मम्मी की याद आती है आपको? यार बर्तन एक्चुअली में आदत हो गई मुझे, आई डोंट कंप्लेन एनीमोर, ओके आदत हो गई। सो आई, जब खाना पक रहा है तभी बर्तन धोना चालू, क्योंकि तो ओके। पक के फिर खा के फिर जब खत्म करते, फिर जब एक साथ पाइल ऑन होता है हाँ तब इट्स अनोइंग। बट व्हेन वन थिंग इज गेटिंग कुक्ड आई स्टार्ट वॉशिंग ऑलरेडी। ओके। तो इट्स तो ठीक है, आदत हो गई, आई डोंट कंप्लेन अबाउट, आई लाइक कुकिंग, तो फिर या सही होता है यार। इट्स कूल यार। हम लोग बट क्लबिंग की जो बात कर रहे थे, मतलब आई नीड टू गिव दिस अ थ्रो बैक, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ मेल फॉलोअर्स ऑफ योर्स, के हुकअप कल्चर क्या है वहां पे क्लबिंग में?
मतलब अगर कोई ट्रिप बनाना चाहे तो फिर क्या है? फेवरेट वर्ड है ये लड़कों का है, मतलब या हुकअप यार, इट्स हुकअप कल्चर इज आई थिंक ऑब्वियसली एवरीवेयर, बट इट्स 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 यहाँ पे तो इट्स ज्यादा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अब्रॉड, या इट्स फाइन, बट देन द रेशियो ऑफ गुड लुकिंग पीपल, लाइक आई एम बीइंग ऑनेस्ट, या ओके, एवरीवन's गुड लुकिंग ब्रो, एंड लाइक तुम भले ही इंडिया में गुड लुकिंग हो बैड लुकिंग हो, आई डोंट यू डोंट केयर, यहाँ पे देयर आर पीपल बैड लुकिंग देन यू एंड इट विल बी इजियर फॉर देम देन यू, वो चीज तो ओके है। एंड तुम हुकअप कल्चर के लिए यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ उतना, ठीक है, तो हाँ तुम स्टार्टिंग यहाँ पे लोग आते हैं 1-2 महीने हुकअप करते हैं uni के टाइम, एंड देन लाइक दे स्टार्ट डेटिंग और लाइक देन दे जस्ट डोंट हुक अप एनीमोर व्हाटएवर, बट दे जस्ट गेट बोर्ड ऑफ इट, यही चलता या है। इंडियंस यहाँ पे डेट ज्यादा करते हैं, दे ऑलवेज कम बैक टू दैट होल या लाइक दे आई वांट टू सेटल फॉर दैट वन गर्ल काइंड ऑफ अ थिंग, यहाँ पे है, जितना भी तुम आके जोश जोश में हुकअप कर ओके लो कि तुम you settle for that one girl here also. I've seen a lot of friends doing that as well, and foreigners यहाँ पे तो उनका तो वैसे ही होता उनका, I mean no offense but upbringing ही वैसा है कि they're always into a lot of people, they या date multiple girls, and यहाँ पे यार मेरे को ये नहीं पता था having a dating someone is different than being in a relationship, and I did not know this in हाउ India. India में you इज इट डिफरेंट? आई डोंट नो स्टिल. है ना, या is being a dating it doesn't mean you're exclusive, you date multiple, ओके ये वाओ. डेटिंग के मैंने बोला यार तुम मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो, दैट्स कूल बट आई डिड या नॉट नो दिस टर्म, बट अभी तो बहुत कुछ आ गया ना, डिल्यूजनशिप आ गया. मैं अभी कुछ पढ़ रहा था 4 दिन पहले कि देयर इज अ डिल्यूजनशिप नाउ. There used to be a situationship वगैरह. Now there's delusionship के. Yeah, it's basic. देन Sorry. इट्स सिचुएशनशिप हो गया, डेल्यूजनलशिप हो गया, देन इट Yeah. इज बेंच्ड इज अ टर्म, What is that? बेंच्ड इज It's like a master class going on. बेंच हाँ लाइक साथ बात चल रहा है, हाँ ठीक है, इफ आई एम तेरे साथ बात चल रहा है बट साइड में मैं और 5 लौंडा से बात कर रही हूँ या मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों से 5 ओके. लड़की, आई एम कीपिंग यू ऑन स्टैंड बाय, यहाँ पे फक अप हो गया, अच्छा. फिर आई कम टू यू मेक टीम बना रहे हो, ठीक है, यही चलता है, ओके इट्स कॉल्ड बीइंग बेंच, तो यहाँ ओके. पे लाइक ये चूतियागिरी भी चलता है हर हर I've been जगह, सो इट्स benched. Yeah, I've been benched. Now I know the term. बेंच ब्रो, डोंट नो इट, आई एम टेलिंग यू, तुम बेंच अरे हो, यार. तुम हमेशा ही बेंच, तुम्हें पता नहीं है बट तुम बेंच हाँ हो. तू है तेरे को पता नहीं लेकिन तू है, ये वही है, बट Oh, fuck. Crazy but yeah, scene. I was reading this like I think reading कुछ तो podcast में podcast नहीं, sorry, it was a random reel and this made so much sense, like something random आते रहता है ना कि how to approach girls Yeah. और तो उसमें this girl was like there's something known as the tourist phenomena or whatever, कि if you're going to a country as a tourist it's so Yeah. much easy to fuck up, or like it's so easy to like approach people because you know that if you fuck up you're not going to see them ever again, ठीक है, Right. तू हग तेरे को पता है कि लाइक हाँ चलो लाइक रिजेक्शन हो गया, मूव ऑन, लाइक क्या तो यहाँ पे रहने थोड़ी वाला है, बट Right. तुम वंस यू लाइक सेटल डाउन एनीवेयर, लाइक यू नो कि तू यहाँ पे you're not a tourist anymore यार, तो घर ही बन जाता है, और तुम वो कंफर्ट से यू कांट जस्ट गो ऑन अप्रोचिंग गर्ल्स और गाइस, लाइक वो नहीं होता, सो अभी True. लाइक दैट्स व्हाई लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट इन 2018 टू प्राग या एम्स्टर्डम, जो भी अप्रोचिंग गर्ल्स वर वे मोर इजियर, Okay. एंड यहाँ पे सो it's like that. I think it's on reputation कि अब यहीं पे रहना है. People know me here. Knowing तुम भी कंफर्टेबल बन जाती, you know you're not a tourist here anymore ना, तुम you might meet Yeah. that person again, तुम्हारा घर Yeah. बन जाता, तुम fine, you're not in that exciting phase, हाँ ठीक है यार मजे करने आया हूँ टाइप, वो नहीं होता, तुम कहीं पे मजे करने जाते हो, तुम्हारा फोकस है मजे, नहीं she doesn't like me, she rejected me, move on, वो Yeah. mentality rejection वाला it's kind of hard once you settle down कहीं पे भी, तो फिर वो होता है, but सही है. We were talking about the mental health situation with the content creation thing and advertising. I'll come back to that, but I want to understand कि what's the mental health status abroad, specifically in London, as compared to India? Like लोगों का कितने vocal हैं about that thing? Is it more in the West या क्या है वहाँ पे? मतलब about the mental health situation. Bro, यहाँ पे mental health issue is more like you start feeling lonely and stuff. I didn't feel like मेरे को आना था abroad, पहली बात. दूसरी बात ये है कि like आते ही मैंने डिसाइड कर लिया था मैं रील्स भर भर के बनाऊंगा, तो फिर
when you're occupied तुम्हें mental health issues नहीं होते. That's what I have noticed. when you're at least कम होते हैं, if not Okay. not. तो फिर when you, so I had promised myself I will keep myself occupied to the max कि मेरे को तो नहीं होगा, but I know a lot of friends कि they start missing home. Undergrad में I stayed with my parents, बॉम्बे में रहता था. I used to stay away from my parents. I liked my pride. I liked staying like in my own space and I like doing my things. तो मेरे को आदत है घर से दूर रहने का, but people directly come abroad है. उनको थोड़ा दिक्कत होता है कि 4 months के बाद हिट होता है यार, जब असाइनमेंट भर रहा होता है तुम्हारे सर पे ना, उसकी इट्स जस्ट लाइक फकिंग क्रेजी असाइनमेंट का, तब तुम घर मिस करते हो कि यार मेरे को अभी बैठ के खाना नहीं बनाना, मेरे लिए खाना काश रेडी होता कि मैं असाइनमेंट पर फोकस करूं. देन इट्स लाइक यार, मतलब यू स्टार्ट मिसिंग पीपल, यू स्टार्ट मिसिंग दैट कंफर्ट. तो वैसा वाला मेंटल हेल्थ इश्यूज आई हैव सीन हियर वेरी ऑफन, बट अदरवाइज लाइक और कुछ नहीं भाई. लाइक इनफैक्ट रिलेशनशिप रिलेटेड मेंटल इश्यूज यहाँ पे बहुत ही कम है. लाइक इंडिया में a lot of people going through something, यहाँ पे वैसा नहीं होता. यहाँ पे like especially as a master student your focus is altogether different. तो तुम relationship वजह से तुम you don't have time to get upset about that I feel, but it's just that ऐसी चीजें घर वर ये सब चीजें तुम्हें ज्यादा upset करती है. But I'm cool, like I'm fine right now. I'm like I mean, it's not a proud thing to like say, but like I'm saying like घर वालों दो बार बात हो, like that's fine. Like I see people on call like every day and that's their way of like probably keeping themselves sane, you know, or like keeping them, वो अलग आदत होती है. But ठीक है यार, it's सबका अलग अलग अपना एक you know behavior होता है, तो it's fine. You also stayed away घर से कभी? Yeah, even right now I'm staying at my own place. घर पे ही है, हमारा 12 साल पुराना घर है, but again घर वाले नहीं है, तो I'm living alone with my co-founder. So my co-founder is also my like childhood friend only. So I'm fortunate that way. So I don't feel lonely or anything. But घर के बाहर I've lived for like 1 year and a half in Bombay. Okay. So and yeah, in the early, so I started traveling outside of Bhopal, outside of the family comfort since the age 17. While I was traveling on the Jagran Film Festival I told you about on the call. So that was like a big thing. It was like a 2-3 month का बाहर रहने का. We had to travel for like 7-8 different cities, starting from Bombay, Delhi, Lucknow to Banaras, and it was like a whole different exposure altogether. Because you get to meet so many people, like you can't even think कि आप अपनी जगह पे रह के कभी इन लोगों से बात भी करते हैं. मतलब आपको जजमेंटल रहता है ना कि इसकी दाढ़ी बड़ी है, मुझे इससे बात नहीं करनी. वो जो बचपन से वो स्टिग्मा बिल्डअप होता है कि नहीं कोई टॉफी लेगा तो नहीं देना है. जब आप भूखे रहते हो तब आप टॉफी भी लेते हो किसी और की. जब आप बनारस में गलियों में घूमते हो, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो आई एम यूज्ड टू लिविंग आउटसाइड ऑफ द फैमिली कंफर्ट. बट अभी जब मैं प्रॉपरली मूव किया 1-1.5 साल से, तो तब it was a different feeling. मतलब I started missing home on some days, like post 3 or 4 months. But yeah, you don't have a choice. Yeah, it is. I don't. Sorry, you said something. You don't have a choice. Like you can't do anything about it. You can't go again and again. कि आज घर आ गए, next weekend चले गए. It's like a lot of travel, money, expenses. You have a lesser choice when you're abroad. India में तो चलो यार तुम थोड़ा घर चले जाओ. टू मच होता था तो मैं वीकेंड में चले जाऊंगा पुणे, क्या फर्क पड़ता है. यहाँ पे तुम क्या तुम ये नहीं कर. like fucking insane. Like you can't make that decision कि next weekend ही है. अभी गया वॉलेट पूरा खाली. I think like again like I said, अगर रहने की आदत है तो अलग बात है, नहीं आदत है तो थोड़ा हो जाता है. It's cool यार. मुझे ये जानना है कि how is it different यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से. आप एमिटी से पढ़े थे, एमिटी मुंबई से, राइट? तो एमिटी altogether is a different culture. Like it gives you exposure जितना हम लोगों ने सुना है बाहर से. So is it true? 90% of my followers एमिटी बॉम्बे से हूँ. वो बॉम्बे में बोला तो है पनवेल में. So people don't know. But exposure यार, I'll be very honest, nothing against Amity. Amity ने कुछ ज्यादा exposure नहीं दिया मुझे. जो मैंने खुद किया, like it was my effort. Like job भी देखना, ये करना, हाँ देता है. Who wants to use it can use it. But मैं खुद से थोड़ा सा like I mean I didn't want to depend on Amity for like job. या are you talking about exposure in terms of like acting या फिर किस टाइप के? एवरीथिंग. आपको एक्टर बनना था हमेशा से, तो एमिटी बॉम्बे मिल गया. भले वो पनवेल में है, बट स्टिल यार मैं बॉम्बे में बॉम्बे जाना था. मेरे को बॉम्बे इसलिए जाना बिकॉज अगेन एक्टिंग व्हाटएवर जो भी है. बट मैं दैट्स व्हाई आई चोज
एमिटी बॉम्बे में ठीक है यूनिवर्सिटी एवरेज है, बट एटलीस्ट मुंबई से थोड़ा सा लाइक आई गेट दैट एक्सपोजर वाया मुंबई. तो मुंबई से एक्सपोजर मिला, एमिटी से नहीं मिला. सो इट्स कूल है, बट इट वाज लाइक आई डिड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मुझे वही करना था. तो फिर इंजीनियरिंग करने वाला था, पर मैं नहीं गया. सो आई चोज दिस मीडिया एंड कम्युनिकेशन या मास कॉम. तो फिर वो किया मैंने एमिटी से. सही था. And how is it different from the university you're currently in London? जितना हम लोगों को लगता है कि यार मतलब बाहर का एक्सपोजर होगा, बाहर की पढ़ाई अलग होगी, तो how is it different from Indian education system? काफी यार, लाइक यहाँ पे तो इट्स ऑब्वियसली द वे यू बीइंग टॉट, इट्स सो डिफरेंट. यहाँ पे एक तो अलग ही प्रेशर है, तुम पैसा इतना भरा है, तुम अब्रॉड में हो तो फिर लाइक वो अलग प्रेशर है. यू थिंक यू हैव टू परफॉर्म वेल हियर, बट टीचर्स फैकल्टीज यहाँ पे बहुत क्रेजी है यार. लाइक दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड पढ़ाने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे माहौल अलग होता है. एंड द फैक्ट दैट लाइक यहाँ के असाइनमेंट्स जो देते हैं दे गिव इट फ्रॉम रियल लाइफ सिनेरियो. आई एम टॉकिंग जस्ट, आई एम नॉट सेइंग कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देता इंडिया में, आई एम टॉकिंग जस्ट विद एमिटी एंड दिस थिंग जो मैं किया है. बट यहाँ पे वी वर्क ऑन रियल लाइफ इश्यूज, रियल लाइफ असाइनमेंट्स जो चल रहा है. कुछ ब्रांडिंग में कोई कंपनी का अपन लाइक वी डू इट थ्रू दैट, बट वी सॉल्व इट फॉर एन असाइनमेंट, यू नो. बट वो सब एक्सपोजर मुझे नहीं मिला एमिटी से. आई विश आई हैड गॉटन, पर वो एमिटी ने नहीं दिया मुझे. बट the faculties are pretty good, and the fact that I learned way more about branding and marketing than I learned in my undergrad. 100%. यहाँ पे जो चीजें मुझे learn करने मिली वो मैं इंडिया में. So but yeah, someone's commenting Amity gave us content. Content, bro. Yeah, we are getting content out of it. It was in my class. Oh, it gave us content of its own, but so yeah. Coming back to the part of content, when did you start content? आपके उस टाइम पे कितने particular followers थे? And what was the first reel or the first piece of content that you put out? यार मेरे followers मुझे याद नहीं है, तब I think 1500 के आसपास थे. ये सारे अपने वाले लोग थे जो मतलब पहचान वाले, ये कुछ भी ऑडियंस वाले नहीं, पहचान वाले थे, रैंडम लोग थे. बट देन लाइक पहला रील था मेरा, इट वाज मी रिमूविंग द बेल्ट टू गेट रेडी फॉर लाइक सम एक्शन और व्हाटएवर. ठीक है, it was like a dirty humor kind of a thing, like वैसा था. like me removing, it's like basically BDSM के तरफ जा रहा था, like me removing the belt to get ready and then cut everyone in the karate class. Did you get it? Like basically happening in a karate. So like that was the reel. Like ये था me getting ready after watching 50 Shades of Grey. So belt for bondage and then cut to everyone in the karate classes looking confused. So that was the reel, bro. What did you expect out of it? Like जितना expect किया था उतना गया? भाई कुछ नहीं, मैं पोस्ट करके मैं नेट बंद करके नहाने चला गया था, क्योंकि मैं I was having कि like पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, क्या है वो. तो फिर कर दिया मैंने, तो फिर थोड़ा बहुत लोग हंस दिए. तो जितना हंसे लोग कमेंट सेक्शन में, whether it was real or to support me, मेरे को नहीं पता, पर अच्छा लगा. That was the motivation I needed to make एक और reel and then एक और reel. That's how it kind of progressed. But सही था यार. That's good. That was the first reel I made. And which was the first reel which like boomed? कौन सा था वो? वो ऋतिक रोशन मैंने मिमिक्री किया था एक. वो था like you know this एक ट्रेंड है ना, hey yo this accent is so sexy, can you do it again? तो मैंने कृतिक का किया था मैंने, hey yo ऋतिक रोशन accent is so sexy, can you do it again? तो फिर वो that blew up, and then instant Bollywood kind of reposted it, and then like that blew up. So that was like a take-off point, I guess, in a way. क्या था स्टोरी, क्या था when instant Bollywood shared? What was on your mind के ये क्या हो गया? क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? क्या चल रहा था लाइफ में? भाई क्रेजी था वो तो, क्योंकि पहली बात तो तब अभी तो वेरिफिकेशन का तो एकदम गांडी मांगी इन्होंने कि लाइक anyone can verify. तब अकाउंट शेयरिंग माय कंटेंट मेरे लिए बहुत ही बड़ा डील था. और इंस्टेंट बॉलीवुड तो हैड लाइक 7.3 million. आई रिमेंबर द नंबर आल्सो. तब 7.3 इंस्टेंट बॉलीवुड मेरे लिए तो बहुत बड़ा डील था. आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स. तो अब मैं देखा फोन में एंड रीशेयर एंड आई एम गेटिंग लाइक फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं एंड लाइक डीएम्स आ रहा है एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है यार ये. एंड इट वाज लाइक अ क्रेजी मोमेंट फॉर मी. तब वो ऋतिक, हाँ ब्रो, फिर लाइक वो डोमिनो इफेक्ट हुआ. फिर मैंने एक और मोदी रील बनाया था, मोदी, दैट वाज लाइक ये मोदी एक्सेंट इज सो सेक्सी, कैन यू से इट अगेन. तो फिर वो भी ब्लो अप हो गया. तो फिर इट वाज लाइक वो दैट गॉट मी फ्रॉम 4,000 to 10,000 सीधा. In how much time? I think 10 days, 1 week. That was crazy. That was
just mad. Did you tell your parents about that, the instant Bollywood thing? I did. Did they get it like how big? Because parents being parents, के instant Bollywood क्या है, page है. यार अब तुम मम्मी को दिखा रही हो, शी इज वाचिंग द ऋतिक रोशन थिंग एंड शी इज लाइक हाँ मिमिक तो अच्छा कर रहा है बट कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ नहीं आ रहा. But कर क्या रहा है? हाँ like कर अच्छा रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? Hey Hrithik, can you say it again? Mintra, Jadoo, like I think I was saying like Mintra and all, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ, उनको क्या पता मिंत्रा का ऐड करता है ऋतिक. Right. कंगना का वो शायद थोड़ा समझ में आया एंड में. Yeah. इन जनरल लाइक वो रिलेट नहीं कर पाते हैं. They might like it, हाँ मिमिक्री अच्छा कर, बट Yeah. वाला नहीं दिखाया बिकॉज माय पेरेंट्स आर लाइक पॉलिटिकल कंटेंट मत बताओ, ज्यादा मत बोलते रहते. तो मोदी वाला You also got into a controversy, right? Because of the Modi reel. मैं मोदी वाला नहीं दिखाया उनको. They हाँ. still don't know it. उनको लग रहा है ऋतिक की वजह से मेरा सीधा 4 से 10 पहुंचा है. यही लगने देता है. इनमें मोदी का भी हाथ है. बट What was the controversy about? Like क्या हुआ था? लोग comments पे चढ़ क्यों गए थे आपके ऊपर? कंट्रोवर्सी नहीं था वो एग्जैक्टली, बट आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट बल्क में हेट कमेंट, यू कैन से. क्योंकि ब्रो ऋतिक के कमेंट में मुझे मिल गया था ऋतिक का सस्ता कॉपी, छपरी वर्जन, ये वर्जन, ये वो. सो तभी आगे थे, बट आई वाज लाइक एनीवे वेरी हैप्पी. आई एम लाइक अरे कान मरा है, लाइक इतने ईस्ट बॉलीवुड का शेयर. मोदी के इसमें वाज मोर लाइक थ्रेटनिंग कमेंट, ऐसे लाइक हिंदी में कमेंट्स आने लगे फ्रॉम पीपल एक्चुअली बिलोंगिंग टू लाइक प्रॉब्ली पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनसे आने लगे थे. सो थोड़ा सा लाइक आई वाज काइंड ऑफ स्लाइटली वरिड, क्योंकि लाइक व्हेन यू आर इन पुणे, व्हेन यू आर इन महाराष्ट्र, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन लाइक इफ यू सी. आई वाज लाइक यार शुड आई जस्ट डिलीट इट. मैं जनरली सोचा इतना आई हैड लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज, मैं सोचा डिलीट कर, पर मैंने डिलीट नहीं किया. तो आई वाज लाइक दैट वाज अ गुड मूव. आई जस्ट केप्ट ऑन मेक आगे के रील्स, तो कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लाइक भाई बस हो गया, मुझे और व्यूज नहीं चाहिए मोदी वाले रील, आगे बढ़ लाइक डिस्ट्रैक्ट पीपल की ध्यान उससे हट जाए. बट हाँ इट इज फाइन यार. लाइक वो थोड़ा चला हेट कि लाइक अगली बार कंटेंट देख के बनाई हो, लाइक ऐसा प्रॉपर अंबाला से कमेंट आना था. हाँ भाई पूरा मतलब पॉलिटिकली बैग्ड. हाँ हिम्मत है तो ममता पे बना के दिखा, हिम्मत है तो इस पे बना के दिखा, उस बना पे दिखा. So वेरी क्लियर कि ओके वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, यू नो. तो फिर लाइक तुम क्या ही बोलोगे. So I just like shut up. I was like मैं चुप ही बैठा था उसके बाद, कुछ ये नहीं किया मैं. तुम कमेंट डिलीट करते. एग्जैक्टली. ऋत्विज आपके सीनियर थे स्कूल में. हाँ या ट्रिगर्ड में देखा मैंने. तो ऋत्विज के बारे में कुछ बताओ, लाइक हाउ वाज योर एसोसिएशन विद ऋत्विज, कैसा रहा? Yeah, Ritviz तो like he was like 2 years senior to me, and then like he used to come to my, it's a two-way relation actually. His Ritviz used to come to my mom for tuitions. My mom is a maths teacher, so my वो tuition के लिए आता था, and then his mom was my music teacher in school, like my in the sense पूरे. So वैसा एक cross association था. He used to come, so like बचपन में like we just kind of knew each other, like he used to come home like for tuitions and तब he used to chill. But then like obviously like when he got out of tuitions, then he got into music completely. तब ज्यादा बात नहीं होती है उससे. But हाँ यार तो फिर ज्यादा association नहीं है ऋत्विज से unfortunately. Later like thing is एक और चीज बता दूं, ठीक है, he from DPS Pune, so like obviously very famous and all. सब लोग like बोलने लगे हाँ मैं जानता हूँ ऋत्विज को, मैं जानता हूँ ऋत्विज. अच्छा वैसा. मैं जो कौन है तो मैं नहीं जानता. यही होता है ना. तो फिर that's what happened. It's cool जितना long I've known him, and it will be great to meet him again, like because like he has grown like crazy. And immensely. Like meet him on a collab with him, that'll be fucking great, bro. तो फिर तो but हाँ ये देख क्या DPS gang सब जानते रहते इसको. देख everyone is like सारे. हाँ मेरे साथ बैठता था ऋत्विज, वैसा वाला है. अरे दोस्त नाम पूछ के देखता कभी ऋत्विज, like who the fuck is this guy? हाँ bro. Does it happen to you as well now कि कहीं से सुनने में आ रहा है कि हाँ मैं तो जानता हूँ रोहित को, and you're like who is this guy? नहीं अभी I mean like my friends have told me when their friends like DM them asking oh my god like how do you know him, like you guys follow each, he follows you, like वैसा वाला genuine, like if they know me they tell me. ऐसा कोई ठोकता नहीं है मेरे साथ, उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं कि लोग randomly. But soon, fingers crossed, soon.
और like I just don't know whether people are like associating. I just don't know. अभी ऋत्विज को थोड़ी पता होगा कि कर रहे हैं लोग. So I just don't know क्या होगा अभी. But या एक डीपीएस की बात निकली ना, तो एक कंटेंट क्रिएटर है, राघव नाम है शायद उनका, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मे बी गलत बोल रहा हूँ मैं, बट ही मेक्स दीज रील्स अबाउट डीपीएस किड्स एंड उनका कंटेंट इज लाइक कि डीपीएस किड्स आर वेरी लाइक हर एक चीज पे फक हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार. एंड द कॉन्टेक्स्ट इज कि एवरीवन रिलेट्स टू दैट वन रील का सेगमेंट उनका जो डीपीएस किड्स का है, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली द डीपीएस स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? लाइक डीपीएस किड्स को लेके आपका क्या है कि डीपीएस का कल्चर कैसा है? आपने देखा, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया? भाई तुम लाइक आई थिंक तुम ये किसी ने रील में भी डाला था ये, आई फॉरगॉट किसने डाला था. तुम सड़क में से रैंडमली ऐसा 4 बच्चे उठा लो, उसमें से 2 डीपीएस के निकलते हैं. पहली बात तुम ऐसा आके रैंडमली उठा लो, ठीक है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात इज दैट सो देयर आर मल्टीपल डीपीएस, ठीक है. एक हो गया डीपीएस गुड़गांव, डीपीएस दिल्ली, डीपीएस नोएडा, जो एक्चुअली है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली के हैं. दे आर द ओजी वंस. अभी देयर आर दीज 3 डीपीएस, डीपीएस पटना, डीपीएस पुणे, व्हिच इज जो कल्चर जो है ना उसका, इट इज वे मोर स्ट्रिक्ट देन ये डीपीएस. तुम देखते हो ना डीपीएस वसंत कुंज, जो भी मतलब आई डोंट रिमेम्बर, या ये सब के बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे हमारे इसमें भी थे, बट वहां के इट्स जस्ट दैट कल्चर इज रियली चिल. यहाँ पे तुम ऐसा करो तो बाल हाथ में नहीं आने चाहिए, ये सब चूतिया. तो इट वाज लाइक द रूल्स वर मेक सेंस. या इट डिडंट मेक सेंस. पहली बात तो मैं फर्स्ट टाइम से लेके 12th तक, like around 15 years of my life I have been in DPS Pune. So very fucking like बचपन से लेके मेरा पूरा लाइफ DPS पुणे में बिता है. So it is because of DPS, like personality wise, like what it, the friends I have are still from DPS Pune. सारे मेरे अच्छे सब DPS के ही हैं. कितने भी हरामी बच्चे हो, सब दोस्त DPS के ही है मेरे. हाँ, वो मैंडेटरी है. अगर आप डीपीएस के हो तो आपको हरामी होना पड़ेगा. हरामी होना ही पड़ेगा. Like, is this that I see like shit changing in DPS कि क्लास में like for example एक कपल कल्चर होता था ना स्कूल में, यू डेट वेट, टीचर्स आके मना करती थी. तुम क्लास में मेकआउट करते पकड़ गए तो डीपीएस ने सारे क्लास में कैमरा डाल दिए, शिट लाइक दैट. तो फिर इट्स गेटिंग स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर बाकी डीपीएस. तो डीपीएस पुणे इज थोड़ा डिफरेंट देन आई वुड से दी कन्वेंशनल डीपीएस जो है. सो it's still बिगड़ा हुआ, not उतना, I don't know, but when I was there तब ठीक था. It was like just getting there, and once our batch left, या जो भी गांड लग गई भाई, फिर तो मतलब बच्चे. अब एक वो भी होता है ना, अपन पास आउट हो जाते हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो अपन को लगता है अपनी जनरेशन, अपना बैच बेस्ट था, बाकी सब तो चूते हैं. वो वाला फैक्टर अभी लगने लगा मैं जब 12वीं बता. नहीं यार, ये क्राउड अच्छा रहा है. Crazy. मतलब ठीक है, like now I don't know teachers, but teachers are great, man. In DPS I would. No, there's this difference honestly. मतलब I was from the school SPS Sagar Public School in Bhopal. Like it counted as the second best school after DPS in Bhopal. So I see a very huge gap. जैसे market gap रहता है ना, तो I see a very huge mindset gap between all the other students. मतलब this is DPS का crowd, this is all the other schools. So there actually is something जो कि वो एक अपब्रिंगिंग में डालना है. द वे यू स्पीक, द वे यू एड्रेस पीपल, वो तहजीब बना देते हैं आपकी. तो आई डोंट नो अबाउट डीपीएस पुणे और एनी अदर स्कूल, बट डीपीएस भोपाल इन दैट सेंस वाज अ प्लेस जहाँ के बच्चों को देख के यू कैन टेल ये डीपीएस भोपाल का होगा. तो दैट इन दैट वे आई लव डीपीएस. ब्रो डीपीएस पुणे वाज नॉट नोटोरियस. इट वाज नॉट नोटोरियस क्योंकि नोटोरियस होने के लिए लाइक देयर वर अदर लाइक चुतिया स्कूल्स इन पुणे. तो फिर वो नोटोरियस हो गया. बट देन लाइक DPS Pune फिर भी like it was fine, man. Like other like because भोपाल में I don't know how it is. Pune must be like known for like ये, but तू easily पहचान लेगा ये DPS का है. पुणे में is actually slightly tough to understand, like identify, at least for me, कि ये DPS पुणे से है. हाँ, शक्ल से मैं जानता हूँ, अलग बात हुई ना. But हाँ, ये किसने बोला Bishops? हाँ, Bishops, like that is a very Bishops as in Bishops is a school. Like किसने comment किया Bishops is a school, like Bishops, St. Mary's, Rims, Vipchi और ये सब. Like the back schools is like वहाँ पे बिगड़े हुए बच्चे ज्यादा है. So like it's crazy. अरे एक डीपीएस है दिल्ली का, कोई सा ब्रांच है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम. आर से कोई सा है, आई डोंट नो, बट वहाँ की बहुत वाइल्ड स्टोरी सुनी है यार मैंने, कि बच्चे कहीं पे भी कुछ भी करते हैं. किधर मैं ऐसा हो गया. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल यार. कोई कमेंट्स पे प्लीज लिख दो, इतने लोग हैं 70-80. आई डोंट रिमेम्बर. डीपीएस
आरके पुरम शायद, if I'm अरे not हाँ, wrong. कुछ आर के पुरम, यस यस Yes, दैट। yes, yes, yes. I have heard wildest stories and I was like, पापा प्लीज दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं. हाँ, भाई people are saying आरके भाई पुरम. Yeah. 7th स्टैंडर्ड के बच्चे कन्फेस पेज खोल रहे, तुम क्या कन्फेस करो मेरे को ये बताओ। तुम 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कन्फेस कर रहे हैं, सो फिर लाइक यू नो लाइक ब्रो लाइक इट्स अ फकिंग वाइल्ड एज स्कूल। Yeah. देखो इंडियन सेक्स स्टोरीज बना रहे हैं वो लोग. क्या बोल रही है, क्या बोल रहा इंडियन सेक्स स्टोरीज है? बना रहे हैं वो लोग पेजेस. तुम 7th स्टैंडर्ड के बच्चे सेक्स स्टोरीज बता रहे हैं, हाँ ये हुआ वो। काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में अग्री भी कर रहे हैं, आरके आरके पुरम। पुरम या लाइन से 7-8 लोगों ने लिख दिया. बट डिड यू वॉच क्लास द वेब सीरीज जो एलीट के ऊपर बेस्ड है? I liked it, right? Quite liked it. काफी सही बना Yeah. है वैसे like, but obviously like वो dramatical बनाने के लिए when you're doing for something like वो करण जौहर level बना exaggeration, obviously it is. I don't think पहली बात तो स्कूल के कोई बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, Yeah. ठीक है, but I think I focus on like if you see other aspects like acting, storyline, Yeah. but it's great. True. But I don't know how bad it is, like the way they showed in class, like उस level पे bullying होती है आरके पुरम में या फिर any other school in India for the matter of fact, मेरे को नहीं पता. Yeah. But yeah, it's a great show. I liked it. I liked it. I loved it. Like I have this cousin of mine, Mm. second cousin, and he studies in one of the schools in Delhi, like very posh schools. And he tells me stories about bullying and everything. And I was like, this is class. It's exactly, his life is exactly the same as class. And I was like, तू बना रहा है मुझसे या सच में होता है? And he showed me some videos वगैरह. And I was like, what the fuck is this? So I don't know like why teachers and everyone entertains that. I No, think but that's the culture. वो wealth वाला status वहीं पे होगा शायद. तो I don't know. वो DPS में नहीं था, होता होगा कोई और स्कूल में यार, for sure, 100%. Like I'm saying, like for example, I think कोई और दिल्ली में, I think Bombay में there's this school called Ryan International, not Ryan. Yeah, I think yeah, Ryan is also a big thing. I've heard like हाँ like you know this guys from Puram, इनके crowd ही अलग होते हैं, इनके दोस्ती अलग पहचानने में तो. Bombay में DAIS is very good. Dhirubhai Ambani International School. Like the सारे people you can. सारे actors के बच्चे. Yeah, like you can spot people. Okay, this I've had conversations with I won't name them, but a bunch of people from DIS, and they're doing something bigger than larger than life. हाँ Obviously, they come from wealth and they have the backing and privilege. But again, Yeah. like very clear mindset वाले. नहीं तो wealth लोग waste भी बहुत जल्दी कर देते हैं. तो they come from a good understanding of how to invest into things, time. स्कूल की याद आ गई. या मतलब मैंने 10th से स्कूल से मतलब मुझे निकाल दिया था, वैसा कुछ था. That Oh. we'll chat later. कभी in person podcast पे. That I can't say live. I want to understand one thing. Like you do the Hritik Mimicry. I was scrolling through the whole Reels feed before this podcast, and you're very famous for that particular thing, right? Like people love you immensely for that. Like people love you in general, but Hritik वाला audience ही आपका दूसरा है. They are like they will die for you ऐसा वाला comment section आप पढ़ लो कुछ भी कर लो. तो do you ever fear that I don't want to be just the Hritik की mimicry करने वाला guy? I want to stand out. And how do you keep those two things separate for new content creators? कि यार मुझे ना इतना इसी चीज को लेके मेन स्ट्रीम नहीं हो जाना है, मुझे बहुत versatile रहना है, and because you also want to do acting in life. So how do you differentiate कि मुझे अब कौन सा content डालना है? I feel like Hritik वाला part is my USP. It is not the only Yeah. skill. क्या हो गया कि I know for a fact कि like that is not the only thing that I'm known for. Like I mean yes, it is Yeah. something that, but like अभी भी शायद comments में people like talk like Hritik, but I can Yeah, it's yeah. not the person I mimic. Farhan, Dhoni, so the जो भी random like it, I can do that. It's just that yeah, that stands out definitely, and it's okay to be like. I feel like it's fine if people know me for that. It is cool, but I also know that that is not the only thing that they know me for. मेरे को पता है कि like हाँ यार मैं सारे content Hritik पे नहीं बनाता हूँ ना. Right. मैं gap out करता हूँ, मैं space out करता हूँ, and I want to be known for my acting. I want to be for my creativity. Then the whole just Hritik thing, and I think that is how it is also thankfully. क्योंकि अगर मैं सब चीज ऋतिक करता है तो फिर like people like अरे ये छोड़ा यार तू पहले ऋतिक का कर, वही होगा. Yeah. है ना. So फिर that's why like I try to mimic as many actors as possible, है ना. तो फिर I like mimicking ऋतिक man, and ऋतिक के अलावा सब देखते हैं यार. वही मैं पूछने वाला था, कभी रीशेयर लाइक कुछ DM कुछ एक्सचेंज हुआ कभी ऋतिक के साथ? One-sided, one-dimensional, तरफा प्यार, hypothetical relationship चल रहा है मेरा और ऋतिक का. delusional shit.
मैं DMs खोलता हूँ, हे ऋतिक, यही है ऐसा। मैं नहीं one-sided thing. वो एक दिन खोलेगा तो बोलेगा मैं क्या है ये वही है, ए ब्रो लव यू, ये बचपन में से भेजा था। ये मैन अभी है, अभी भी वो मैसेजेस हैं, अनसेंड कर दिया आपने? नहीं सब है ब्रो, लाइक सब है। कीप देम, अभी बहुत जल्दी जब आप उनके साथ कुछ करोगे ना तो इट विल बी अ गुड रिफ्लेक्शन। Here we started, here we are. someday please Hrithik. Yeah. You're also planning to come to India soon. Let's see bro, I'm planning like Got it. but yeah if Hrithik like बात होगी, I wish he Yeah. sees ऋतिक अगर बुलाएगा तो पक्का कल आ जाएंगे, वैसा bro. वाला। I think anything if I meet Hrithik or if कुछ भी हो जाए Hrithik के साथ, तो I think I will I think I have achieved मतलब मैं Yeah. चैन से भाई एक महीना सो ब्रेक पाओगे। ले सकता Yeah. हूँ पॉट रील्स से whatever, like I'm like this is what I worked for, finally हो गया टाइप, but Yeah. someday भाई। Great. हाँ ब्रांड कोलैबोरेशंस को लेके फॉर ऑल द न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो हाँ बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, आपकी पहली ब्रांड कोलैबोरेशन क्या थी एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम? एंड हाउ डिड यू अप्रोच देम, डिड दे अप्रोच यू, या फिर प्रोसेस क्या होता है, हाउ डज द ब्रांड प्रमोशंस वर्क? I think it worked best पहली बात तो brand this thing like but initially like I was very clueless about it, to be honest, brand कैसे होता है, like do you have to approach या they approach, when I hit like around 8K 9K तब जाके कुछ brand एक direct करके आया था, that was a startup, मेरे को याद नहीं किसका था, about It's an about online hiring. हाँ it's Yeah. online platform of like helps you in recruitment or something like that, you know, Yeah. डायरेक्ट के साथ किया था। I had no value of my worth, like कितना मैं चार्ज करूँ क्या ये, तब मैंने like whatever I quoted, I know it was too less but for me it was a big deal, so direct दोस्तों के बताया था, वो लोग भी बहुत खुश हो गए थे, हम like यार this is a good thing, like direct was my first collab, then later I did collabs with Spotify, I've done around like ज्यादा नहीं हुआ यार, like I think 8 or 9 collabs I have done, but सही है जितने सारे सही है। एक मैंने आयुष्मान खुराना की मूवी थी डॉक्टर जी, उसका कोलैब मैंने किया था एक, क्या था एग्जैक्टली, क्या था उस कोलैब में? no I had to like basically like kind of promote the movie, Okay. like ऐसे तुम I don't know if you've seen those reels हैं जहाँ पे like तुम creators actors कोलैब करके कुछ बनाते हैं टाइप, Yeah. यहाँ बैठे बैठे तुम्हें वैसे ही can't meet आयुष्मान ना, तो फिर like मैं I had to create something funny regarding doctors and then वो कुछ उससे रील मैंने बना दिया था। But it's not tough, man. Brand collabs can work both ways. I would one advice I would give is like, हाँ यार, you just should know your worth. I did not know my worth, but now I know कि like, यार, if I need to collab, I know, हाँ मैं brand से I would want this if I'm giving this. So अपना worth जानो, and then like it will come automatically. I would say don't work for collabs. Collabs अपने आप आते हैं. Just work for your quality content and stuff. क्योंकि जब वो बढ़ता है, अपने आप collabs आ जाएंगे. तो वो कुछ सीन नहीं है, वो दैट इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न, वो आ गए तो बहुत सही है यार, वैसा नहीं आया तो इसमें मजा आ रहा है। हाँ क्योंकि वो मेरा प्रायोरिटी था ही नहीं, मैं पैसे के लिए बना, दिस इज जस्ट लाइक ओके सही है पैसे आ रहे हैं तो लाइक ब्रांड कोलैब से वैसा हो गया ना, आइसिंग है, या इट्स लाइक एन आइसिंग, वही हो गया, बट इट्स कूल। ओके, एक्टिंग को लेके मुझे बस ये जानना है आपसे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, हम लोग क्या रख सकते हैं एक्सपेक्टेशन रोहित राघवेंद्र से कि व्हेन आर वी सीइंग यू इन अ मूवी, अ शो, और what's your plan with acting? Like your love for acting is very visible, you're very vocal about it. I wish I could put a like timestamp to it या फिर like a date to it कि like यार अगले साल पक्का, you don't know ना यार क्या सीन होगा। मैं I should tell my जिस दिन मुझे एक्टिंग मिल जाएगा मैं सब छोड़ के इंडिया जाऊंगा, मैं सब like I will leave everything and I'll come to India like अगले 1-2-3 दिन में, just the minute I get a gig or the whole you know, so बस it will ये बोलूँगा कि यार I won't say that I have struggled for acting. There are people actually actors हैं जो बॉम्बे में जाके आराम नगर करके एक एरिया है, वहां पे ऑडिशंस के लिए 2 घंटों तक लाइन में खड़े होकर 100 ऑडिशंस देते हैं, मैंने वो नहीं किया है, एंड आई डोंट हैव द पेशेंस और द टाइम टू डू इट राइट नाउ, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, इसके थ्रू जो एक्टिंग दिख जाए वो है, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट आउट ऑफ इट। इससे यार इफ आई बिकम विजिबल और फिर एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो फिर ग्रेट यार, बट I don't know if I have time to like just leave everything and try for acting. वो थोड़ा सा it's and I think it's late. I think I'm not sure if I can take that risk right. You know? It's not, but
Yeah, मतलब I hear you. I understand what you're हाँ, saying. see, it's never too late for risk or whatever, but यार बोलना आसान है, but again True. like कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही ना यार. तुम जॉब तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कंटेंट तुम Definitely. बनाएंगे पड़ेगा, एक्टिंग तुम साइड में ट्राई करते रहो. आई Right. विल कीप, जिस दिन हो जाए तो बस इट विल बी द बेस्टेस्ट डे We'll do a second episode that day and post it out. 100 The promo episode of your. Hopefully, I'll reach to a bigger number. तब तक, so we'll 100. do a proper promo. Yeah, you तो obviously you're growing daily, so not too much on that. हाँ यार, but Okay. Any final advices for all the new age wannabe actors, wannabe content creators, influencers, what not to do? क्या नहीं करना उनको? यार ये कि like I always say कि like always have a plan B. It's very important. तुम it's okay like तुम acting पे पूरा focus कर रहे हो, but what if it just doesn't work, you know? So you should always have something to fall back on. पहली बात तो ये, ठीक है. दूसरी बात, I feel like another thing that is important is acting is an industry, like I mean Bollywood or जो भी, it's very easy to get disappointed and 90% तुम्हें rejection ही, ठीक है. तो वो 10% के लिए I feel like find an avenue for yourself. जैसे कि like लोग YouTube के थ्रू करके एक्टिंग में घुस चुके हैं. There are so many creators who have done that. Yeah. So it's just Major movies like proper Dharma, Yashraj movies. वही exactly. So मैं बोल रहा हूँ कि like थोड़ा अपना avenue figure out करो what you're good at, and then like I think build on it, and then you can like probably find your way through that. So I feel like सिर्फ acting कर रहे हो, try to make yourself good at something else also जिसके through तुम जा सकते हो acting में, क्योंकि बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं. Like I know कि like if I was in India, I mean I won't say for sure, but शायद मुझे कोई ad में मिल जाता. मूवी छोड़ो, ad में तो मुझे चांस मिल, रील्स कर रहा हूँ. I feel like make your avenues बनाओ, platform पे stick मत करो. I am saying that's kind of ironic coming from my side. मैं YouTube में I've been wanting to upload कब से मेरे reels या जो, I will start soon. But expanding the avenues is very important. तो मैं चैनल अपना बढ़ाओ तो ताकि एक holistic growth हो ना, हर तरीके से grow होना थोड़ा important है. And हाँ यार, it'll happen. जब होगा. It's just that just don't give up. I know it sounds very cliche, but मत करो. Just it's and एक और चीज, watch movies not for entertainment. Just try to learn something from movies like acting. ये वो थोड़ा help करता है वो, when you notice actors, when you notice certain things. Mimicry सीखा है ना तुम, ऋतिक के movies देख के मैंने mimicry सीखी है. So it's just that know what you're good at. ऐसा देख के movies. बस यार यही, और कुछ. Yeah, that's a very good advice. Like I'll use it for myself as well. What's your take on law of attraction, manifestation? Do you believe in it? Do you decline it? What's your thought? Manifestation में बहुत ज़्यादा believe करता हूँ मैं. I'm not just saying it ऐसे क्योंकि ये तो मैं भी कर रहा हूँ. It's just that like manifestation is just not कि तुम सोच के हो जाए type. I feel like obviously तुम्हें you have to slightly work towards it. इसलिए manifest तभी काम करता है. I feel like manifestation थोड़ा important है to have an overall positive approach के लिए. पहली बात तो manifestation थोड़ा important है. दूसरी बात ये है कि I have experience like when I did not get any COVID के time I was applying for a job and I did not get it. I was trying to like continuously jobs मिल जाए and side में reels बना रहा था and नहीं मिला job. So then I was like fuck it, like मैं फिर reels ही बनाऊंगा. तो फिर मैं वही करते गया and हो गया. Like things clicked, it worked out, channel expand हो गया. So I feel like manifestation does work. It's just that it's not like तुम सोचते घर बैठे हो जाएगा. थोड़ा मेहनत करना पड़ता है manifestation के लिए, but definitely I believe in manifestation and I feel like people should. It does work. तो फिर सही है. It's I believe in yourself. बस वही. I started believing in manifestation. Why I asked this question was because I declined the concept of law of attraction वगैरह third year of college तक. But when जब मुझे job नहीं मिल रहा था ना, तो third year से placement चालू हो जाते हैं engineering में. तो मेरा placement नहीं हो रहा था, सारे दोस्तों के होते जा रहे हैं. जो मुझसे अच्छे हैं उनके तो हो ही रहते हैं, जो मुझसे खराब है उनके भी हो रहे हैं. And I was sitting like what the fuck is happening with me. And उस time पे this thought like के मतलब वो कुछ नंबर्स रहते हैं ना, एंजल नंबर्स वगैरह, 11 ये सारी चीजें. अरे हाँ. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग द पैटर्न्स एंड आई वाज लाइक कि ओके व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. एंड आई देन started reading this book called The Secret, and then I was like blown up. Did you read the book? Yeah. You should. If you believe in the concept of attraction and
manifestation. The secret is like a doorway, a completely anywhere door है वो डोरेमोन का. Like once you enter that, number actually काम करते हैं? Like, do they actually like signify something? the angel numbers. Yeah. देखो, it's up to people. Like I don't believe on the angel numbers वगैरह a lot. I just take it as a positive symbol for me. कि if it's a thought and if I spot the same numbers again and again. So every angel number has a different significance. 11, 11, 4, 4, 4, 3, 3, 3, right? So I don't know a lot about कि कितना वो काम करता है. But I've noticed a pattern that if I'm seeing those numbers again and again, then actually my thought process becomes stronger. So I think that's also psychological manipulation जो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ maybe. But वो yeah, it does work for me. validation हो जाता है ना, slight, Yeah. like slight what you do, वो important है. Yeah, but you should definitely read the book The Secret because you do believe in it. मतलब you will love it. Like we'll have a call once you read the book. एक Because yeah. का काम कर जाए बस भाई, कितना बुरी हो. Definitely. Look out. Secrets ना, मैं देखता हूँ. Yeah, The Secret. ठीक है, I Yeah. will do that. I really manifest for you कि आप फटाक से अब कुछ ऋतिक के साथ कोलैब में करो और maybe for fighter, जिसके लिए भी I'll be the happiest person. Thanks. We usually do this segment के किसी गेस्ट को हम लोग लाइव ले लेते हैं, like random लोगों को. But for this part we'll skip it right now क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया. If you are okay with that, then we can do it. But क्योंकि it's exceeding the time limit, आप जैसा बोलो. It's up to you, bro. अब बताओ मेरे को चलेगा. I mean live lead. एक किसी को ले लेते हैं क्योंकि it's like a pattern जो कि follow करते आ रहे हैं. Hello. Hi. Hi. So nice to meet you, bro. Nice to meet you. I love your work. I am also a content creator, so it was really great to know your insights and how you go about it. Thank you so much. बता आप कहाँ से हो यार? I'm from Mumbai only. I'm Mumbai से ही हूँ and I'm making content अभी 2 साल हो गया. I started as a stand-up comedian and now I'm a comic. I'm a content creator. I left comedy for. type of content बनाते हो? Funny या फिर what kind of content? Funny content. Funny content. Content ही बनाता हूँ. Yes. I make funny content and I love your work. I think you're very original and I mean I love that how you put layers in your jokes and also something that I really admire and you never fail to entertain. Thank you so much. Not entertain, sorry. I'm really nervous. Hey, thank you so much. यार आप कब से बना रहे हो content? यार मैंने तो जैसे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से स्टार्ट किया था जब मैं सिर्फ 19 साल का था. तो मैंने अभिषेक उपमन्यु इज माय आइडल. मैं उनके साथ भी शो किया है मैंने, तो उनसे बहुत सीखा. हाँ यार. बट स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता था ना, आई हैड टू ट्रैवल. मतलब आप दूर जाते हो अंधेरी में इधर से एंड देन वहां पे 2 लोग ही बैठे रहते ओपन माइक में. इट्स लाइक द हार्श रियलिटी एंड दे आर लाइक कि हंसा के दिखा. तो वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद, यू नो, एंड यू हैव टू डू द सेम जोक्स अगेन एंड अगेन which is a little monotonous, but it's part of the process. So I was not enjoying that process, and this is much more fun where you are on your toes and you have to constantly think what will work and update yourself to the local trends and all. Yeah, man. आप अभिषेक उपमन्यु like you opened for him? आप कैसे? Yeah, I opened for Abhishek Upmanyu, and he is such a sweetheart that he used to guide me. And he always used to laugh more than the audience at my joke, which was like a huge. It is still a huge accomplishment for me. All the followers and all know. Abhishek Upmanyu was in the green room and he used to laugh more than the audience at my jokes. That was. Thank you so much. Great, I'm glad. यार, stand-up comedy is not easy at all, bro. Like मैंने It's not. I bombed. Yeah. मैंने छोड़ा. You bombed. That's the part of it, you know. Really bad. But I'm glad, bro. Like you finally. I mean, opening for someone like Abhishek is not easy, yaar. So I'm sure you must have reached a level where at least. Yeah. Audience आपका बन गया होगा ना? कि like. हाँ, मतलब I never talk about it. This is the first that I'm talking. जैसे मेरे audience पे भी थोड़ी आई है. They like. I was in a part of a all India competition where I came in top. गजब भाई. सही है. यार अच्छा था वो. जो ज़्यादा मतलब. बड़े content. मार्केटिंग एक ब्रांड डील ही था वो, मतलब जस्ट इंटीग्रेट करना था ब्रांड. तो वो प्रमोशन ही था बेसिकली और थोड़ा सा कैश प्राइज मिल गया. उससे मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया फोन बिन पे एंड एवरीथिंग. एंड नाउ आई एम डूइंग यार एंड आई एम लविंग इट. इट्स लाइक इट्स वेरी टफ मेंटली बट या गेटिंग देयर. बस I'm telling you,
it's just that like like when it's mentally tough up करते रहते हो, फिर there comes a point where it's tough यार, बस उसी के लिए काम करते रहो, क्योंकि what you're doing is definitely more tough than what I'm doing यार, 100%. क्योंकि जब आप बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स रखते हो अपने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, है ना, तो उसमें से कुछ चलता है, तो it's crazy tough, bro. Like damn respect. And thank you, Rohit, for doing this, by the way. And people needed to know about what a creator goes through and what their mindset is. And thank you so much for doing this, yaar. I mean, I was really thinking कि कोई कर नहीं रहा है ये, and it was really a delight. I'm glad I shared, bro. I'm glad. क्योंकि I know probably there are other creators who probably would want some guy, I mean, who are not confident enough, yeah, who are like probably unsure. So I wish that अगर great सही है. ठीक है तन्मय, इसको मतलब I'm really sorry to interrupt, but yeah, let's end this one. You can Thank you so much for inviting me, and thank you, Rohit, and thank you, Karunya, for doing this here. Hope to see you, hope to meet you someday when you come to India. Soon, brother. Hope to see you. I'll come for your है ना, तन्मय DM कर मेरे को. Done. Yeah, bro. Thank you so likewise, much. bro. Thanks, brother. Sorry, Karunya, if I took some of your time. अरे नहीं ब्रो, लाइक मेरा कहाँ टाइम, इट्स अबाउट रोहित भाई टाइम, बट किसी के टाइम की बात नहीं है. मतलब थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन द लाइव थ्रू आउट, और मुझे भी प्लीज आप DM पे बताना जब भी नेक्स्ट शो हो रहा हो. मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ. And 100%. Yeah, nice talking to you. Nice talking bye, to you. Bye, bros. Take care. Yeah, so that was it. Tell me one last thing, what not to do for me, like as someone who's elder to me, what not to do for me, a generic advice, whatever you think, a life learning या कुछ भी. Life यार, ये तो बहुत ही ऐसा intense question हो गया, like what not to do. तो ऐसा I would say okay, this is थोड़ा सा, I don't know if it's सबके साथ, but if you ask for advice from people will give. तो मत पूछ. I know like तो because तुम जितना ज्यादा एडवाइस मांगोगे उतना ज्यादा तुमको मिलते रहेगा, और तुम जितना मिलते रहेगा उतना ज्यादा you will be unsure and less confident. So choose those 2-3 people, ठीक है, जिनसे like probably you shouldn't ask for advice like from everyone. वो 2 लोगों से तुम पूछो जो तुम्हें, या एक भी रख यार, जो तेरे को honest चीज बताएंगे, अच्छा या बुरा. Just keep that, because तुम किसी से फीडबैक मांगते हो तुमको मिल जाता है, एंड इट माइट नॉट बी अ फीडबैक दैट यू लाइक, देंगे लोग. सो ज्ञान तो आई फील हाँ, वो if you are confused about anything or something, ask one person, but keep that one person as your probably only source, I would say. And that person should be someone who's credible, या फिर आपका मतलब कोई मेंटर हो तो अलग बात होगी, है ना, या फिर कोई दोस्त है तो, बट उससे ही लो, क्योंकि आप जितने ज्यादा पूछोगे उतना मिलेगा, एंड देन आई फील लाइक इट kinda hampers your thinking process. So that is one thing. And obviously bro, अगर podcast में बड़ा कर रही हो तो one thing I've known is like or any content creation, quality of the content itself, I'm sure आपका great है, क्योंकि I've seen you've called like Yashraj and all, like in your podcast, it's great. I'm sure you're calling great people, whatever, but जब आप I think live podcast start करोगे ना, I think it's very important to invest in a good camera, a good background, क्योंकि the more serious you take something ना, तो फिर उतना seriously लोग देखने वाले भी लेते हैं, है ना. तो फिर आप जब क्वालिटी पे इन्वेस्ट करते हो, बोले हाँ भाई प्रॉपर सेटिंग वेटिंग बना के कर रहा है, तो मतलब क्वालिटी भी वैसा ही रहेगा, एंड पीपल विल वॉच इट. तो फिर जो भी कर रहे हो क्वालिटी वाला करना, बस वही. That's a great lesson for me, or I hope to see you soon sometime. Definitely, I'm looking forward to meet. बाकी अब मैं जान तो खाते ही रहूंगा आपकी कुछ भी एडवाइसेस लेने की, यार ये रील सही जाएगी या नहीं जाएगी, वैसा भी कारण DM कॉल कभी भी आपके पास, you can do that. Done. Thank you so much. Let's wrap this one. Thank you so much everyone who stayed throughout the podcast, and Karunya, it was great talking to you, brother. Likewise. And thank you Chad for being active, and whoever stayed, like whoever watched, thank you. Have a good night. It's good afternoon here. Good afternoon. Have a good night. Bye.